या गुड इवनिंग ऑल ट्रेडर्स, वेलकम टू द सेशन। आज एक फिर से गिरावट का दौर देखने मिला मार्केट्स में एंड मार्केट संभल नहीं रहा, दैट्स फॉर श्योर। सो मॉर्निंग में वॉट एवर वी डिस्कस्ड, डिड एनीबडी ऑब्जर्व दैट और इम्प्लीमेंट दैट? व्हाट आई हैड क्लियरली शोड वाज द चैनल। कितने लोगों ने, कितने ट्रेडर्स ने चैनल फॉलो किया? गिव मी यस और नो। It was very very clear once market broke the channel that आज का जो प्राइस एक्शन है वो मंदी की तरफ जा रहा है। डेटी ट्रेडर सेज यस, ओके। एंड मार्केट जो है ओवरसोल्ड में पुश कर रहा है, विच इज highly oversold markets. But as I said, a strong downtrend continue to remain go down. Prices can go down in spite of being oversold. Oversold is no reason for a bottom. Why? Because markets are backed by, or you can say whatever is happening geopolitically, uske basis pe the reactions are happening. The trend is clearly down, the price action is down, and everything. So let's launch ourselves. Chalo dekhte hain. Before I start, yeah, let me read your questions. Yeah, Daily Trader is there. Okay, welcome. So this is for educational and informational purpose only and does not constitute any financial advice. So I have prepared a plan for Nifty. The trend is down. आज का कैंडल है, बेरिश है। आज के हाइक के आसपास जो है 24,700 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है, 24,300 का सपोर्ट है। लेट्स सी वेदर इट होल्ड्स और ब्रेक। टेक्निकल स्टडी राइट नाउ इट इज बिलो द एवरेज, बट वन थिंग आई विल हाईलाइट टुडे इज आरएसआई पे ध्यान दो, डाइवर्जेंस साइंस में स्टार्ट अपीयरिंग। ओआई बिल्डअप 24,600 का है, कॉल साइड रेजिस्टेंस, पुट साइड 24,400 इफ इट ब्रेक्स फर्दर डिक्लाइन। पीसीआर इज स्टिल 0.67, मतलब कोई भी इट्स शोइंग बेयरिशनेस टू कंटिन्यू। स्ट्रैडल प्राइस इज वेरी हाई, वॉलेटिलिटी इज हाई 427 एंड मार्केट्स आर डाउन and oversold. So let's go and check Nifty. ये निफ्टी है। निफ्टी has still not breached the last low, but having said that, हम कब बोल सकते हैं कि लास्ट लो क्रेडिबल है? ओनली व्हेन वी सी अ सीक्वेंस ऑफ हायर लोज एंड हायर हाइज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन अप ट्रेंड। इन अ डाउन ट्रेंड, इफ मार्केट अगर कंटिन्यूसली पुश कर रहा है लोअर प्राइसेस की तरफ, then last low at some point of time breaks. So for us to conclude that support has been established, we need a clearly sign of trend reversals by way of higher lows and higher highs. Till that is not happening, all bounces or pullbacks are corrective in nature, likely to go. But having said that, एक चीज अभी ध्यान रखो, फिर से मार्केट ये इंपॉर्टेंट लेवल पे आ रहा है। वंस इट टेस्टेड इट बाउंस। सेकेंड टाइम क्या होता है ना, ऐसा जो लेवल्स एकदम प्रोमिनेंट है, इफ इट ब्रेक्स, द ब्रेक कैन बी रियली अ हार्ड वन। जस्ट कीप अ नोट ऑफ दैट। एवरीबडी क्लियर? अभी अगर 24,330 या 24,300 टूटता है, then probably we might see a deeper decline all the way. अभी ये गैप भरना बारी, जैसे मॉर्निंग में हमने देखा था SGX निफ्टी हैज फिल्ड दिस गैप इक्विवेलेंट लेवल। तो भी 24,100 या 23,900 के आसपास मार्केट आ रहा। आर यू ऑल अवेयर ऑफ इट? विल यू एबल टू कीप अ वॉच ऑन इट? डेटी ट्रेडर सेज यस। सो नाउ लेट्स मी गो टू 15 मिनट्स चार्ट्स। मॉर्निंग में हमने देखा था कि ये मार्केट को as long as channel intact है, trend intact है। Did anybody follow the channel today? And the moment it broke the channel, ये channel करीब आपका 12 बजे के आसपास टूट गया था। The moment it broke the channel, we had a decline. How many of you observed this channel which we discussed in the morning? और हमने बोला given the current market, Citi trader yes, Shankar yes, Sharma ji yes, Shankar yes, okay, that's great to know, आप फॉलो कर रहे हो। और ऐसे मार्केट में जहाँ पे शार्प मूव्स आता, वी हैव टू यूज एंड अप्लाई चैनलिंग टेक्निक्स फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ट्रेडर के लिए। और मैं इंट्राडे में ज्यादा ऑक्सीलेटर्स इंडिकेटर्स आई डोंट यूज इट, दैट्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। इफ रिक्वायर्ड वी यूज इट, आई एम नॉट सेइंग एब्सोल्युटली नॉट, बट इतने वाइल्ड स्विंग्स में योर प्राइस एक्शन अलोंग विद चैनलिंग टेक्निक्स आर अ गुड। तो यहाँ पे जैसे 12 बजे के आसपास ये चैनल टूटा,
we saw a decline. Now, purpose of this channel is over, remove it. देखिए moves sharp आ रहे, swings are okay sharp. So what you have to do is again now create a fresh channel. ये लो का ध्यान रखना. This low is not from here. वो एक daily का low है, which is very prominent. Now I'll mark a channel like this. Take the high. आज का high दिखा है, and I'll mark it. So now everybody clear which is the new channel which we are following. ये जो YouTube में मेरा face is coming on the right, it's covering the entire picture. अगर किसी को idea है तो बताइए how to bring this video cam of mine on the left. Anybody any idea? कोई techie है यहाँ पे? Nobody is a techie out there? Okay. So now from here on you have to follow a channel. Channel का मतलब ऐसा होता है ना, as long as the upper end of the channel this is intact, prices will keep on going down. एक channel टूट जाता है, then we get an indication of a bounce or a pullback. No Shankar, it is not working with the help of a mouse. No, it is just stuck at a place. So it's on the extreme right. मेरे chart पे आ रहा है, and I like my chart to be very clean. Nothing should be there, but can't help. Let's go on. Thanks Shankar for pointing that out. I'll try it after the sessions. So from here on, this is the channel in a 15 minutes. Everybody give me a yes if you'll be able to follow the channel. I want yes from you all. जब तक चैनल के अंदर है, नीचे रेजिस्टेंस है, ये लो टूटा तो we might see one more sharp dip. This low is equal to this, which is equal to a very, very strong medium term low. So from here, let's say markets are here and further down. And till it's not breaking the channel, ये जो ऊपर का चैनल है, मैं डाउन मार के चल रहा हूँ. Okay. Arijit says yes. Okay. So now after that, हम लोग देखिए इंडिकेटर, नो पॉइंट यूजिंग इट राइट नाउ. सिर्फ एक चीज मैं बोलूंगा कि ये मार्केट इज इतना ज्यादा ओवरसोल्ड मार्केट. लास्ट when we had seen, last I have seen such oversold markets on a daily time frame chart around the COVID lows. So I'll go to my Stocko Incred Money platform and I'll open Nifty. इतना oversold मैंने COVID के टाइम देखा था मार्केट. When I say oversold, it is with reference to Bollinger Band. So give me a minute. This is Bollinger Band. अभी मार्केट जो है, see that's what I'm saying. It's covering my screen. Yeah, now it's there. Fine. ये Bollinger Band के नीचे चला गया था. So if I do this, let me see. Yeah, now it's coming clear. So markets are highly oversold below the Bollinger Bands. So itna oversold market, we are seeing it after a very long time. Right? I repeat, such oversold markets we are seeing after a very, very long time. But having, जैसे मैंने पहले बोला, strong downtrend can push further down even in oversold till we don't see a reversal. तो सिर्फ oversold को reversal मान के मत चलो. From oversold we need signs of confirmation, and that will be like at least minimum break of the last high, जो कभी हुआ नहीं है. बट इस पे आप ध्यान रखो, RSI पे अभी डाइवर्जेंस आना चालू हो गया. We have started getting divergence on RSI. So I'll just remove the Bollinger Bands and I'll go to RSI. Yes. So RSI में एक divergence यहाँ पे आया था. You had a sharp rally which was budget day. Now this is the low. अभी तक divergence आया नहीं है, but we'll keep a watch on it. If I see from here to here, yes, I can call it as a divergence. Absolutely, I can. But ये देखिए एक setup study है, trade study नहीं है. But हमें setup को भी ध्यान में रखना. So this low from here to here, even on RSI, एक higher lows बन रहा है. Are you all able to see this? So divergence signs have started appearing. We are taking note of it. But remember, जो भी divergence है, bottom reversal signs है, they need confirmation. Just because oversold है, bottom बन जाएगा, we can't say. So don't be under that impression. Trade the markets on a daily basis. When the reversals are happening, we'll come to know, and we are daily meeting twice a day.
So that was on the Nifty side. अगर हम बैंक निफ्टी में मैं जाता हूँ, सो बैंक निफ्टी अभी तक जो स्ट्रेंथ दिखा रहा था, टुडे इट हैज रियली क्रैक्ड हार्ड। लास्ट लो के नीचे बंद हुआ, और ये लो के नीचे बंद हुआ, बट एक बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज मुझे दिख रहा बैंक निफ्टी में, इज दैट इट हैज आल्सो क्लोज्ड बिलो द 200-day मूविंग एवरेज। देख लेते, आई कुड बी शेड हायर शेड लोअर। मॉर्निंग में जब हमने देखा था तो 200 दिन का एवरेज यहाँ पे था। आई एम प्राइस एक्शन पर्सन, तो ज्यादा इंडिकेटर आप नहीं देखे, वो स्टिल इज होल्डिंग द 200 डीएमए, एंड 200 डीएमए इफ बैंक निफ्टी इज ब्रेकिंग, दैट मीन्स जो मंदी का दौर चल रहा, दैट माइट कंटिन्यू। सो बैंक निफ्टी वंस इट ब्रेक द 200 डीएमए, नेक्स्ट माइनर सपोर्ट लेके चलते, एक यहाँ पे भी है which is this low, and there is a gap over here. See, अगर reversals नहीं आ रहा, market will have a tendency to fill all the gaps, which is 57,000 के आसपास। Getting it everybody? Please take a note of it. Intraday में यहाँ पे एक line डाल दो। So the moment you put a line over here, you'll come to know this line which is running on my daily chart. Let me remove that. Is a 200-day moving average. Just drop a line here. जब आप डे ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद 15 मिनट पे जाओ, बिकॉज फिर पता नहीं चलेगा अचानक ये टूटने के बाद जोर से डिक्लाइन क्यों आया और ये होल्ड कर गया तो पुल बैक क्यों आया। देन यू हैव अ वेरी वेरी क्लियर आंसर। ये जो लेवल है मेरा 57,493, वो 200-day मूविंग एवरेज है। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट अगर आपके हायर टाइम फ्रेम एवरेजेस आपके इंट्राडे चार्ट्स में डिसीजन मेकिंग हो सकता है उस दिन, तो मेक श्योर आप डॉटेड लाइन से उसको पुल आउट करके इंट्राडे चार्ट्स पे ले आओ योर डेली डिसीजन और डेली एवरेजेस। गेटिंग इट एवरीबॉडी? दिस मार्क कर लो यहाँ पे, चार्ट पे ऐसा रहना चाहिए बैंक निफ्टी का 200 डीएमए, एंड टुडेज कैंडल इज बेयरिश। अदरवाइज समटाइम्स वी डोंट नो व्हाई मार्केट क्रैक्स सो हार्ड, बिकॉज कोई बड़ा एवरेज टूटा होता है। बाय डूइंग दिस यू विल कम टू नो। सो कैंडल इज बेयरिश एट द लास्ट लो, एकदम क्लिफ हैंगर है 200 डीए पे, 200 डीएमए पे, एंड yeah, I have read out the disclaimer. Once again, I'll read it. This is for educational and informational purposes only, and it does not constitute financial advice. और देखिए, टेक्निकल स्टडी में निफ्टी में बोलिंगर बैंड के अलावा कुछ नहीं है, और बोलिंगर बैंड व्हाई वी आर सीइंग इज गेटिंग ओवरसोल्ड, पुश फर्दर इनटू ओवरसोल्ड। सो फ्रॉम बोलिंगर बैंड यू कैन नाउ शिफ्ट टू आरएसआई फॉर ओवरसोल्ड रीडिंग, because there are no signs of reversals. जब तक रिवर्सल साइन नहीं आते, ओवरसोल्ड just gives you a reference, nothing more study than that. We need to wait a sign of reversals. और बैंक निफ्टी 200 डीएमए के आसपास आ गया, मार्क करके रखो वो लेवल्स अपने चार्ट पे। प्लीज मेक श्योर ऑन योर इंट्राडे चार्ट्स यू हैव अ डॉटेड लाइन व्हिच डिनोट्स द 200 डीएमए कमिंग फ्रॉम योर डेली चार्ट्स ऑन निफ्टी। इट विल बी very very key to watch out for. Open interest in the call side in bank nifty 57,800 and 57, I think 50, देख लेते, I think I have made some mistake. 1 second. Nifty, I think we were clear. We go to options data, we go to bank nifty, we go to OI statistics. Nifty में 58,000 है और put side में 57,500 है, 58,000। तो ये अपना एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? पीसीआर अभी थोड़ा नरमी की तरफ आने लगा फ्रॉम 9.8 समथिंग पॉइंट 0.77, और स्ट्रैडल प्राइस दिखाता है कि इट्स बिट हाई। निफ्टी इज 427, बैंक निफ्टी इज 2290, वॉलेटिलिटी रहेगा, एंड ट्रेंड फॉर बोथ इज डाउन। इट्स जस्ट ओवरसोल्ड ऑन द बोलिंगर बैंड्स, इंट्राडे हिकअप्स रहेगा। एंड नोट, आई जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप सी डेली प्लान है बट आप डे ट्रेड भी करते हो, एंड इफ यू आर डे ट्रेडिंग, टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। वन, वेदर इट्स अ 5 minutes मैं लिख देता हूँ और अ 15 minutes टाइम फ्रेम, द चैनल्स। सेकेंड चीज यू हैव टू प्लॉट इज योर VWAP, and third thing you have to plot is know your support and band and your resistance band. How many of you are following VWAP? ये 3 चीज मार्क कर लो।
If you're carrying a pen and a paper or a diary, make sure you mark it. This will be the part of a plan, and we can't ignore channeling techniques given the current volatility, because once the pullback आता है ना तो वो channel के अंदर रहता है, and once it breaks the channel, the entire pullback is over. Everybody noted it down? Give me either a yes or a no if you have noted it, daily trader. Okay, done. So after that, let's move on to gold. How many of you are trading gold over here? Okay. See, you should take advantage of gold futures trading also, because अभी तो क्या common ledger है, आपका पैसा ledger में पड़ा हुआ, in the evening you can trade gold with it. So gold पे अब अगर आप देखने जाओ ना, तो ये जो 1 2 3 4 दिन का जो रेड कैंडल है, इट्स डिस्टर्बिंग. व्हाट हैपेंस, ऐसा जो रेड कैंडल रहता है, दैट कैन टेक शेप ऑफ दिस बेस, एंड वंस अ बेस ब्रेक्स अक्रॉस द बोर्ड, हम लोग अभी एक चीज जो देख रहे हैं, देयर इज अ शार्प स्विंग ऑन द डाउन साइड, एंड वंस दिस सपोर्ट बेस ब्रेक्स, गोल्ड माइट गो इन फॉर अ टॉस, विच मीन्स एक छोटा सा डिप आ सकता है, विच इज 158,307. तो ये लेवल पे गोल्ड का ध्यान रखो. सो देयर इज नथिंग मच इन गोल्ड देन दैट. और गोल्ड का जो हाई बना, ये शूटिंग स्टार के साथ हाई बना, विच मीन्स इसके ऊपर अभी हम गोल्ड नहीं देख रहे. ये रेजिस्टेंस बन गया गोल्ड का. सो कीप अ वॉच ऑन गोल्ड एट अ बेस एंड एट द रेजिस्टेंस. इन बिटवीन अगर आपको कैसे प्रेशियस मेटल्स ट्रेड करना इंट्राडे, सो यू गो टू अ स्टॉको इनक्रेड मनी प्लेटफॉर्म, और यू कैन गो टू द यूट्यूब चैनल. मैंने पूरा 2 आवर्स का एक रिकॉर्डिंग करके रखा, हाउ टू ट्रेड प्रेशियस मेटल गोल्ड एंड सिल्वर इंट्राडे. हाउ मेनी ऑफ यू वॉच्ड इट? डू यू वांट मी टू शो यू द चैनल? और सबको पता है, whatever you say. Sharma ji says I do. Deity trader says no. Harpreet Singh ji, yeah, welcome sir. So make sure you watch that, okay? So that will help you to trade. And just say before, I will not take much time because everybody. Okay, I'll just show you. मैंने जो अभी 3 points लिख के दिए in your trade plan, आपको वो implement करना. Let's say Nifty. So what are the 3 things आज मैंने आपको लिख के दिया? 5 और 15 मिनट का चैनल, हम कल मॉर्निंग में भी इसको रिवाइव करेंगे. वीवैप और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये 3 चीज आपके ग्राफ पे होनी चाहिए. So how to plot it? I'll show you. So this is Nifty. First I go to 15 और इवन 5. अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो 5. तो चैनलिंग हम इसलिए करते हैं ना, बिकॉज ये मार्केट स्विंग्स मार्केट है, इंट्राडे भी बड़ी बड़ी स्विंग दे रहा है. द मोमेंट यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट टूट गया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट टूटने के बाद इफ आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन आल्सो ओवर हियर, ये सपोर्ट भी टूट गया, व्हिच वाज एन इंडिकेशन ऑफ अ बेरिशनेस. गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज व्हाई. अभी इसका काम खत्म हो गया. सो नाउ वंस अ डिक्लाइन सेट्स इन, आपका चैनल लोअर आना चाहिए लाइक दिस. सो नाउ जस्ट फॉलो दिस चैनल. इसका मतलब है जब तक ऊपर का एक ब्रेकआउट नहीं आ रहा, तब तक मार्केट इंट्राडे बाउंस पुल बैक आएगा, अगेन इट विल पुश डाउन लोअर. चैनल टूटने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि देयर विल बी अ पुल बैक. जैसे यहाँ पे ऊपर बढ़ रहा था, आई विल जस्ट शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यहाँ पे भी एक स्मॉल चैनल था, कैन यू ऑल सी दिस? द मोमेंट टू इट ब्रेक, सी शार्प ब्रेक, पुलबैक्स भी तो शार्प आ रहे हैं ना मार्केट में, पुलबैक्स आर नॉट very small one. So how to capture those pullbacks? Just mark a channel. Falling channel break karta, it's a pullback on the upside. If it breaks the rising, it is going down. So अभी आप एक चीज ध्यान रखो, all the moves right here are channelized. आप देख रहे हो, whether the small ones or the big ones. So remember, in terms of price action study, when there is a volatility which is surfacing, which is 200-300 points up, 200-300 points down, your channeling techniques for a day trader is of a great use. Got it everybody? और इसके ऊपर आप VWAP डाल लो. So VWAP in your brokers platform, you will get it in futures. So VWAP दिखाता, एक बार VWAP तोड़ता, that means it shows that now prices are on the downside. Earth Edge Capital, yeah, in your brokers platform you'll get VWAP on futures and not in spot. Any brokers platform you get it only in spot, sorry, futures.
तो फिर आप एक वीवैप ऐसे डाल लो, जस्ट प्लॉट योर वीवैप. फॉर एग्जाम्पल मार्केट ओपन टुडे और एक बार वीवैप तोड़ रहा है ना, सो एक इंडिकेशन आता है एक नरमी का दौर है, फाइनल वीवैप छोड़ दिया एंड ऑन अ बाउंस ऑन अ पुल बैक आप देखो इट ओनली ट्रैवल थ्रू टिल वीवैप. आर यू ऑल गेटिंग इट? वीवैप क्रॉस ही नहीं किया, अगर वीवैप नहीं क्रॉस कर सकता है, दैट says that there is a selling pressure in the market. Everybody getting it? How to use the VWAP? Give me a yes. Okay. So जो आज मैंने डिस्कस किया, एक्सप्लेन टू यू हाउ टू यूज इट, विच इज 5-15 minutes channel, VWAP support and resistance band. From today your VWAP should be there in front of you. Absolutely, Harpreet Singh ji, VWAP is powerful for commodities also. As a day trader or somebody who is trading on a daily basis, if you have not plotted the VWAP on your price chart, you have made a trading mistake. Remember that. VWAP आपके चार्ट के ऊपर होना चाहिए. On that note, friends, we end the session. Again, हम कल सवेरे मिलेंगे at 8:45 and we'll review our plan again based on what's happened around the globe. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day, everybody. Yeah, now I'll just try the camera setting.